Good afternoon, students. Welcome all again. As you all know, we had a lecture on Saturday itself. In that lecture, we understood about the new physical quantity that is acceleration. So let us quickly revise what we have done in the previous lecture. तो अभी acceleration का definition हमने देखा था. That is nothing but rate of change of velocity. मतलब वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए मैंने क्या किया था ये एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम इस सबको मैंने क्या किया सिंबल दिया. तो वो सिंबल क्या था या लेटर उसको डिनोट किया. तो कौन से लेटर्स दिए एक्सेलरेशन को दिया लेटर ए स्मॉल लेटर ए फाइनल वेलोसिटी को दिया मैंने स्मॉल लेटर बी इनिशियल वेलोसिटी को दिया स्मॉल लेटर यू एंड टाइम को दिया स्मॉल लेटर टी. सो द formula for acceleration becomes a equals to v minus u upon t, a very important formula on which we are going to see numericals later on. Further, we also understood the unit of acceleration. So SI unit of acceleration was meter per second square. And इसका CGS unit क्या देखा हमने centimeter per second square. So these are the different things we need to understand. Further, if you see, we also discussed about three types of acceleration. The first one was positive acceleration, जिसमें velocity क्या होता है, the velocity increases. Then we saw negative acceleration in which the velocity decreases. Then we saw zero acceleration, meaning the velocity remains constant. So these were the different points we discussed in the previous session. Now further moving, we are going to talk about motion a little bit in detail. तो अभी motion अगर देखोगे ना, तो we see things around us which are generally in motion. तो motion सिर्फ एक टाइप का नहीं होता. We have different types of motion. For example, ये जो कार है बाइक है इट इज मूविंग स्ट्रेट मीनिंग इफ द ऑब्जेक्ट मूव स्ट्रेट दैट मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन. क्या बोलते हैं इसको लीनियर मोशन. So any motion or any object when it starts or it moves in a straight line, such kind of motion is called as linear motion. तो 9th standard में and 10th standard में we are only going to talk about linear motion and some other examples of motion, that is circular motion as well. तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूमता है तो उसको अपन बोलते हैं circular motion. तो a part of circular motion is also what we are going to learn here. So now let us talk about linear motion, but just for example, अगर मैंने ना आप थ्रो बॉल खेलते हो ना, व्हेन यू प्ले थ्रो बॉल व्हाट यू डू इज इधर से आप बॉल फेंकते हो. ये बॉल फेंकने के बाद ये बॉल ऐसे जाता है ना, ऐसे एक पर्टिकुलर पाथ या ऐसा पर्टिकुलर कर्व बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी मोशन. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट. फैन घूमता है, जो फैन घूमता है उसको अपन बोलते हैं रोटेशनल मोशन. So if you see, we have different types of motion, but we are going to only consider on linear motion. So now linear motion मतलब क्या, motion in straight line. So now if you understand, ये linear motion, it has been governed or it has been understood a better way by three equations. We call those equations as equation of motion, or simply we also call it as kinematical equation of motion. क्या बोलते हैं इसको, kinematical equation of motion. These three kinematical equations of motions are extremely important to understand the linear motion. Again, what is linear motion? Linear motion मतलब motion in straight line. Object ऐसे गोल 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 घूमता नहीं है. Object कैसे जाता है, सीधा जाता है. So if you see, this is a kinematical equation what we are going to understand. But now kinematical equations कहाँ से आए? If you want to understand that, you need to
get familiar with the concept of graphical representation of motion. Graphical representation of motion में हम करने क्या वाले हैं? So we are going to do simple things. Whatever observations we have, उन observations को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे. So whenever I say graph, ग्राफ मतलब आपके दिमाग में आता है x axis and you have y axis. So a graph has x axis and y axis. उसका intersection point is called as origin. So you have already learned this in geometry or maybe algebra. Now understand this. We plot a graph of the quantities we study. तो ग्राफ हमेशा हम लोग दो क्वांटिटीज का निकालेंगे. तो उसमें दो क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दूसरा क्वांटिटी होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो हमेशा याद रखना, independent quantity is always plotted on x-axis. Independent quantity is always plotted on x-axis, and dependent quantity is always plotted on y-axis. So if I give you an example, I have two quantities, time and distance. तो इन दोनों में से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा होगा? The independent quantity is going to be time. So what I do is I plot time on x-axis, and distance, it is a dependent quantity, so I draw it on y-axis. We all know that time does not stop, it just continues to move, right? So time is an independent quantity and distance is a dependent quantity. So let us take another example. If I say acceleration and velocity, acceleration and velocity, can you guess dependent quantity कौन सा and independent quantity कौन सा? Acceleration is going to be independent quantity, तो वो आएगा x axis पे. आप एक्सेलरेट करते हो तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना. तो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट एंड वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन. तो हम लोग वेलोसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. So this is just for your understanding. We are now going to focus on time and distance ka graph, which we also call it as distance time graph. What do we call it as? Distance time graph. Now, whatever motion we have studied, we are going to talk about what we have that motion are of two types again. First is uniform motion. And can you guess another type of motion? The second one is going to be non-uniform motion. So we are going to talk about distance time graph first for uniform motion and second distance time graph for non-uniform मोशन. तो पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं. अच्छा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है बट ये यूनिफॉर्म मोशन ही कुछ नया है ना. सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस इन यूनिफॉर्म मोशन. तो इसके लिए मैं क्या करता है, आई एम गोइंग टू टेक टाइम on one particular column and distance on another column. Let time be in seconds and let distance be in meter. So what I do is मैं एक एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्व किया एंड आई मेक नोट ऑफ दैट रीडिंग्स. सो आई सी दैट टाइम जीरो था तभी क्या हुआ, डिस्टेंस जीरो था, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट में ही था. नाउ व्हाट आई डू इज स्टॉपवॉच चालू किया, ऑब्जेक्ट मूव करने लगा. आई सी दैट 5 seconds हुए. आफ्टर 5 seconds आई सी दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हाउ मच इज इट, 7 मीटर. कितना है, 7 मीटर. Now further, after taking more 5 after taking time interval of 5 seconds, time हो गया 10 seconds. At that point of time, the distance covered by the body कितना है, तो 14 मीटर. So on. 15 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, तो 21 मीटर. 20 सेकेंड्स में बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 28 मीटर. एंड फाइनली and on time 25 seconds the distance covered by body is how much, 35 meter. अभी इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोलते हैं, जस्ट नोट वी हैव टाइम डिफरेंस. देखो टाइम का इंटरवल देखो, इज इट 5 seconds,
0 minus 5 minus 0, 8 minus 0, 5 seconds. 10 minus 0, 5, 5 seconds. 15 minus 10, 5 seconds. So if you see, time interval is equal. अच्छा, इक्वल टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस कैसा ट्रैवल किया वो देखते हैं, चलो। फर्स्ट 5 सेकेंड्स में 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। नेक्स्ट 5 सेकेंड में मतलब 5 सेकेंड से 10 हुआ, तभी डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 7 से 14, मतलब और 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आगे भी 14 से 21, मतलब कितना? 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो इफ यू सी, 7 मीटर का distance is being covered at 5 seconds ka time interval, which is constant. So such motion is called as uniform motion. मतलब क्या? Equal distance in equal interval of time. The body covers equal distance in equal interval of time. Such kind of motion is called as uniform motion. अब इसका ग्राफ देखते कैसा आएगा। तो हमने अभी देखा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे व्हाट डू टेक? ऑन एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक an independent quantity which is time. In this case, time is going to be in seconds, and on y axis we are going to have distance which is going to be in meter. Of course, but अभी हम लोग जब भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं, व्हाट वी डू इज वी कंसिडर स्केल। तो स्केल मतलब एक्स एक्सिस पे इफ यू सी, टाइम इंटरवल इज सेम, राइट? हाउ मच इज इट? इट इज 5। टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड्स। तो मैं क्या करेगा, ओरिजिन से लेके ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। आई रिपीट, ओरिजिन से लेके 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसको मैं 5 सेकेंड दे देगा। तो अगर मैंने वैसा किया तो क्या होगा? 0, 5, 10, 15, 20, 25, that is going to be my, that is going to be the numbers on the x-axis. So on x-axis, I consider 1 centimeter. I consider 1 centimeter is equals to 5 seconds. अच्छा, further moving on, अभी मुझे y axis में भी स्केल लेना है। तो y axis में क्या करेगा? I'll consider 1 centimeter. अभी यहाँ पे देखो, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 7 का इक्वल इंटरवल है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द सेम स्केल एज इट इज। तो क्या आएगा? 0, 7, 14, 21, 28, 35, that is on y axis. I consider 1 centimeter equals to 7 meters. So this you are very much familiar. You have already learned this in algebra. Now what we are going to do is we are going to plot the graph. चलो देखते हैं यहाँ पे। अभी पहला देखो, टाइम भी जीरो, डिस्टेंस भी जीरो, मतलब एक्स एक्सिस भी जीरो, वाई एक्सिस भी जीरो, मीनिंग दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिन 0, 0। इफ आई सी द सेकेंड ऑब्जर्वेशन में टाइम इज 5 एंड डिस्टेंस इज 7, मतलब एक्स एक्सिस इज 5, वाई एक्सिस इज 7। तो दोनों का इंटरसेक्शन जिधर आएगा, आई एम गोइंग टू मेक अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी 5, 7। अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखो, थर्ड ऑब्जर्वेशन में एक्स एक्सिस इज हाउ मच? एक्स एक्सिस इज 10, वाई एक्सिस इज 14, मतलब टाइम 10 है, तभी डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 14 मीटर। सो टाइम इज 10, दैट इज एक्स एक्सिस इज 10, वाई एक्सिस इज 14, and whatever intersection we have, we mark it with a point which is 10 comma 14. Further, if you see, we have 15 comma 21, 15 comma 21. So 15 is x-axis, 21 is y-axis. Wherever we have intersection, हम लोग क्या करेंगे? उस पॉइंट को मार्क कर देंगे 15 comma 21. So likewise, we are going to plot all the points in the table. तो यहाँ पे हमने क्या किया? पॉइंट्स को मार्क कर दिया। Now, if you observe properly, if you observe this graph properly, all the points on this graph, whatever we have drawn,
उसमें से कैन आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. I can draw a straight line passing through all the points. So मुझे जो ग्राफ मिला, whatever points I plot and whatever, when I joined all those points, whatever graph I get, that graph is nothing but a straight line. And whenever I get a straight line graph, I call it as a लीनियर ग्राफ. क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर ग्राफ. अभी देखा था ना, कोई भी चीज जब स्ट्रेट होती है हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, द ग्राफ which we have formed is a straight line, therefore we call it as a linear graph. So what is the conclusion here? The conclusion here is distance time graph for uniform motion is a linear graph. What is the conclusion we have? The conclusion here is distance time graph for uniform motion कैसे होता है वो? It is a linear graph, मतलब it is a straight line graph. So here, this is the conclusion we have for distance time graph of uniform motion. Abhi, let us see what if I consider a non-uniform motion. So now I am interested to find मुझे non-uniform motion में graph कैसे मिलेगा. So what I consider is I consider distance time graph for non-uniform motion. Now again, to plot a graph, I need observations. So what am I going to do? I'm going to make a table. Table में on one column, I'm going to consider time in seconds. On another column, I am going to consider distance in a meter. चलो अभी observation लेते हैं. What are the observations? Time zero था तभी distance covered was zero. Time become 10 seconds. I see that the distance covered by the body is how much? 1 meter. 20 seconds पे distance कितना cover हुआ? तो 4 मीटर कवर हुआ. 30 seconds पे 9 मीटर, 40 seconds पे 16 मीटर, 50 seconds 25, and so on. Now if you see, let us see the time interval. Can you guess what is the time interval? What is the time interval? The time interval is 10 seconds. 10 minus 0, 10. 20 minus 20 minus 10, 10. 30 minus 20, 10. 40 minus 30, 10. So if you see, the time interval is of 10 seconds. But वही time interval पे let us see अपना distance covered भी equal है या unequal है. That is try to find out. So 1 minus 0 is 1. 4 minus 1 is 3. I'm sorry about that. Let us continue here. So if you see, यहाँ पे जो distance covered है, that is not equal. कैसा है वो distance covered? The distance covered is unequal. But अभी let us try to plot the graph of distance time. So what I do is on x-axis I take time, on y-axis I take distance. अभी scale क्या लेने का? Let us try to understand. X-axis पे हमने लिया 1 centimeter as 10 seconds. So एक एक centimeter में what I'm going to do is I'm going to mark 10, 20, 30, 40, 60 and so on. On y-axis, let us see. अभी y-axis पे क्या है लिया अपन ने? तो y-axis पे 1 centimeter is 10 meter. तो मैंने क्या किया? 10, 20, 30, 40 ये मैंने सेम लिया. अभी if you see, zero time पे distance covered is zero, मतलब that point is going to be at origin. अभी x-axis is 10, x-axis is 10 and y-axis is 1. So x-axis is 10 and y-axis 1, which is going to be between y-axis पे between 0 to 10. तो एकदम छोटू सा ऐसे लग के आएगा एकदम नीचे. So this is going to be 10, 1. चलो अभी 20 देखते. 20, 4.
20 यहाँ पे, 4 किधर आएगा? अगेन बिटवीन 0 एंड 10, वाई एक्सिस पे 0 एंड 10 के बीच में ही 4 आएगा. फर्दर इफ यू सी 30,9, 30,9 अगेन वाई एक्सिस के बीच में ही आएगा, 0 एंड 10 के बीच में ही 9 आएगा. फर्दर इफ यू सी 40,16, 40,16, now this 16 on the y-axis it is going to come between 10 and 20. So I just intersect these lines. Next, 40,16 हुआ, then we have 50,25. ये तो बहुत simple है. I have 50, I have 25, which is exactly going to be between 30 and 40. Next, what we have is 60, 36. So next axis I have 60. On y-axis I'm going to have 36, which is again going to be between 30, which is going to be between 30 and 40 on y-axis. The next one is 70, 49. 70, 49 जो एकदम 50 के एकदम नीचे आएगा. सो 50 के नीचे 49, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसा सीधा खींच लिया. जिधर ये इंटरसेक्ट होगा दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी 70, 49. So this is the plotting of points whatever we have on the table. अभी अगर यहाँ पे देखोगे आप, ये जो पॉइंट्स है ना, these points you cannot draw straight line. तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे हाथ है ना, ऐसे हाथ को हल्का सा कर्व करने का, एंड वो लाइंस को ना क्या करने का, ऐसे ज्वाइन करते जाने का. यू आर सपोज टू ज्वाइन इट all the points not with the scale but freehand. You joined all the lines without scale, freehand, you get such kind of curve. Curve, whatever which has generated, you see, is not a straight line. This is a curve, it's not a straight line. So is it a linear graph? Exactly not. So linear का opposite क्या होगा? Linear का opposite होगा non-linear. So here I conclude that motion is a non-linear graph. So this is about uniform motion and non-uniform motion. All right. So let us quickly revise what we have done. So we have understood that we have different types of motion, but in this chapter, what we are going to understand, or in this standard and the next standard, we are only going to talk about linear motion, matlab motion in straight line. In this kind of motion, we are going to talk about यूनिफॉर्म मोशन. कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड वी अंडरस्टैंड दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अ स्ट्रेट. This is what we are supposed to remember. दो points important है which you are supposed to remember. The first point is distance time graph motion is dash graph. What is the answer? Answer is linear graph. And point number two. What is point number two? Distance time graph for non-uniform motion. कैसे होता है वो? It is a non-linear graph. So these are the 2 points you are supposed to remember. And what do you understand by linear? Linear matlab straight. What is linear? Linear means straight. Now, ऐसा body है. Body ऐसे सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है. What kind of motion is this? It is a linear motion. अभी यहाँ पे ध्यान दो. Body इधर से start हुआ, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है. टर्न लेके नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, बट फिर भी इट इज मूविंग स्ट्रेट. It is a linear motion. If you see, whatever, however the body goes, if it is in a straight line, it is a linear motion. So the body, when it moves in a straight line, is a linear motion.
And in ninth and 10th standard, you're only going to look into linear motion. The three equations we are going to see later on. So now what we do is, let us have a doubt solving session. Um, Let me come back to the screen. All right. So, all right. So, let us have 1 second. All right. So let us quickly have